हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। टुडे विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Prime numbers are natural number which are divisible by 1 and the number itself. So very simple definition, prime numbers are those number which are divisible by 1 and the number itself. जैसे example देख लेते हैं, 2 divisible by 1 and by number itself, 3 divisible by 1 and the number itself, 5, 7, 11, 13. So all these numbers are divisible by 1 and the number itself. Very simple. The prime numbers are the number which are divisible by the 1 and the number itself. Always remember that 1 is neither prime nor composite. Always remember 1 is neither a prime nor a composite. Now we will see what are composite number. So composite number are the number which have more than 2 factors. Which are more than 2 factors. Like for example, 6. 6 is a composite number because 6 is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 3, divisible by 6. So it becomes 6 is a composite number. तो composite number को हम कैसे बोल सकते हैं? All those number which have more than 2 factors are composite numbers. So, and all the natural numbers which are not prime numbers are composite numbers. Okay? All the natural numbers which are not prime numbers are composite numbers. So, ये clear हो गया? What are prime numbers? Prime numbers are the number which are divisible by the 1 and the number itself are prime numbers. Composite numbers are the number which have more than 2 factors. Next is theorem 1.1. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वेरी सिंपल, समझ लेते हैं इसको। इट स्टेट्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक irrespective of the order. Okay, it states that the any example देखो, any composite number, this is composite number, any composite number can be expressed as a product of prime numbers. All are prime numbers. So this is fundamental theorem of arithmetic. It means that any composite number can be expressed as a product of prime numbers. Very simple. So यहाँ भी देख लेते हैं, suppose x is a composite number. X is a composite number. If we factorize, x is equal to p1, p2, pn, where p1, p2, pn are prime numbers written in ascending order. ठीक है, तो ये एग्जांपल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। देख लेते हैं ये कैसे आया है। 3, 2, 7, 6, 0 फैक्टर बना देंगे। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 0। नेक्स्ट अगेन 2 से जाएगा, 2 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 0। अगेन 2 से जाएगा, 2 4 8, 0, 2 9 18, 1 2 5 10, 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 4 5 45, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 3 9। अगेन 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3 एंड 91। 7 से जाएगा, देन 13 जा, सिंपल। इसको लिख लेते हैं। तो इट स्टेट्स 3 2 7 6 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 2 into 2
2 into 2 into 2 multiply में 5 into 3 into 3 5 into 3 into 3 multiply में 7 into 13 7 into 13। अब इसको कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। लाइक 2 वाले सबसे पहले लिखने हैं 2 into 2 into 2, नेक्स्ट 3 वाले 3 into 3, नेक्स्ट 5 7 13। और इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बार है 2 की पावर 3 इंटू 3 2 बार है 3 की पावर 2 इंटू 5 5 की पावर 1 और 5 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। So this is fundamental theorem of arithmetic. It states that any composite number can be expressed as a product of prime numbers. Next we will understand the concept of LCM. LCM and HCF. First we will see what is LCM. LCM is the least common multiple is defined as the smallest number the two or more number have in common. ठीक है, LCM is least common multiple। तो LCM की फुल फॉर्म क्या होगी, least common multiple। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज 2 इंटीजर 2 and 3। What are the multiples of 2? Multiples of 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, all these are multiple of 2। then 3, then multiples of 3 6 9 12 15 18 24 27 20। so what are the least? so 6 common, let's see common multi, see 6 is common, 12 is common and 18 is common। So the 6 12 18 are common multiple of 2 and 3, common multiple of 2 and 3। हमें कौन सा देंगे, but number 6 is the smallest, number 6 is the smallest, so 6 is the least common multiple of 2 and 3। तो समझ में आ गया LCM least common multiple, so least common multiple। So with this example we understand the 2 integer 2 and 3, the least common multiple is 6। next the देख लेते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर which divide exactly the given number। एग्जांपल देख लेते हैं, HCF निकालना है, सपोज 16 and 24 HCF निकालना है, तो कैसे इसको होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 24। तो विद 16 24, but these are the factors of 16, factors of 24। कैसे, 16 can be written as 1 into 16, 16 also can be written as 2 into 8, 16 also can be written as 4 into 4। तो 1 2 4 8 16 are factor of 16। 24 can be written as 1 into 24, 2 into 24, 3 into 8, 4 into 6। So factors of 24 1 2 3 4 6 8 24। so highest common factor, so now highest common factor, highest। so we see the highest common factor on 16 and 24 is 8। highest common factor, this is highest common factor। इसके बार तो हाईएस्ट है नहीं, 16 है, 16 इसमें नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज नथिंग बट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, द HCF is the greatest number which divides the two given number, So in our example 8 is the HCF which divides 16 and 24। अब in our chapter we in the last two slide we
स्टडीड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम क्या क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलें या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलें, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ, टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ का हम कैसे निकाल लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल से देखेंगे। हाउ एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। इसमें जो हमें एलसीएम के निकालने के लिए हमें लेना है ग्रेटेस्ट पावर को लेना है, एंड एचसीएफ को निकालने के लिए हमें स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। आप याद सकते हैं एच मतलब है स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम लीस्ट मतलब है ग्रेटेस्ट पावर। ऐसे हम लगता है दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ग्रेटेस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो इसमें ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर तो एच के अंदर जो एचसीएफ निकालने में तो कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। जब हम ये निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूलेस को हम याद कर लेंगे। And again, if we see for any two number A and B, for any two number A and B, A and B, A and B, for any two number A and B, the product of two number is equal to the product of their HCF and LCF. ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। The product of two number, for any two number A and B, the product of two number is equal to the product of their HCF and LCM. Okay, fine. तो देख लेते हैं इन दिस स्लाइड हमने क्या सीखा। HCF कैसे निकालना है? HCF को कैसे निकालना? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, ऐसे में प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन prime factors of the number. LCM is the product of greatest power of each prime factor, and we see the product of two number is equal to the product of their HCF and LCF. ठीक है, okay, next. इस एग्जांपल में हम देखेंगे एग्जांपल 2 कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे? एग्जांपल 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे? 6 के फैक्टर्स कर लेंगे। 6 2 3 6 3 1 3. 6 can be written as 2 into 3. Next 20 फैक्टर कर लो। 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5. So 20 can be written as 2 की पावर 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना 5. फाइंड द एलसीएम एंड HCF. LCM में हमें लेना है हाईएस्ट पावर ऑफ। देख लेते हैं पीछे। LCM में लेना है हमें हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट LCM में हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसमें एक प्राइम फैक्टर है 2, प्राइम फैक्टर है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2. ईच प्राइम फैक्टर 3 की पावर 1 यहां से ले लेंगे, एंड देन 5 इधर तो नहीं है, 5 की पावर 1. So this is our LCM. 2 की पावर 2 into 3 into 5. This is our LCM. For HCF, we have to take least power of common prime number. Least power of common prime factor. Least power common. 2 is common and least power 2. And 3 is not common, 5 is not common. So HCF is 2.
I hope this is clear. Next, consider the number 4n. Consider the number 4 to power n, where n is a natural number. Check whether is there any value of n for which the 4th power n ends with the digit 0. If 4 to power n ends with 0, it should be divisible by 5. If 4 to power n ends with 0, it should be divisible by 5. So 5 must be 5 must be there in prime factorization of 4 to power n, but 4 to power n can be written as 2 to the power n into 2 to the power n. It contains only prime factor 2. So there is no value of n, there is no value of n for which 4 to power n ends with 0. आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है. तो इसमें ये पूछा है कि 4 की पावर n फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 की पावर n ends with 0. If 4 to power n ends with 0, it should be divisible by 5. So it should be divisible by 5 must be there in the prime factorization of 4 to power n. But 4 to power n can be written as 2 to power n 2n. So it contains only prime factor 2. Only prime factor 2. अगर 2 की पावर 2n का हम prime factorization करें, it contains only 2. 5 तो इसमें कहीं है ही नहीं. 5 नहीं है तो how can the 0 can come? So there is no value of n for which the 4 to power n ends with 0. Next, find the HCF of, next example 3, find the HCF of 96 and 40 by prime factorization method and find their LCM. तो first 96 के हम फैक्टर्स करेंगे. 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीन 6. So 96 can be written as 2, then 8, 2, 3, 4, 5, 2 to power 5 into 3 की power 1. Next 404 ये फैक्टर कर लेते हैं. 404 4 0 नेक्स्ट 2 एकम 2 2 एकम 2. नेक्स्ट so 404 can be written as 404 can be written as 2 की power 2 into 101. Now first find HCF. First find HCF. So least power of common friend. The common 2 is common. Yes, the least power 2 to the power 2.
So HCF is, and 3 is not common, 101 is not common. So what is HCF? HCF is 4. HCF is 4. First part is done. Next हम find the LCM. तो हमें पता है L for two numbers A and B, product of two numbers is equal to product of LCM and HCF. वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं. सो फॉर 96 and 404, 96 into 404 into LCM and their HCF. So 96 into 404 divided by HCF is equal to, हमारे पास LCM आ जाए, which is equal to 96 into 404 divided by HCF. HCF में आ गया 4. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9696 9696. नेक्स्ट फाइंड द LCM and HCF of 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले हम 6 को फैक्टर कर लेंगे. 6 के फैक्टर 2 3 is 6, 3 1 is 3. 6 can be written as 2 into 3. 72 के फैक्टर्स कर लेंगे. 72 के फैक्टर्स कर लेंगे. 2 3 6, 2 6 के 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे. 72 कैन बी रिटन एज 2 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2. नेक्स्ट 120 के भी हम फैक्टर्स कर लेंगे. 120 के फैक्टर्स कर लेंगे. 120 के फैक्टर्स 2 6 के 12, 0 2 3 6 0 2 3 3 5 15. तो 120 को भी हम लिख सकते हैं. 120 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1. अब इसका निकाल लेंगे LCM and HCF. फर्स्ट LCM then we will find HCF. LCM है highest power of each prime factor. highest power, तो पहले 2 देखो. highest power 2 की पावर 3, each prime factor, highest power of each prime factor 3, highest power 3 की पावर 2. next each prime factor 5, highest power is 5. so this is comes out to be 360. next HCF least power of common prime factors. common prime factor 2 common, yes 2 is common, the least power is 2. next 3 is common, yes 3 is common, the least power 3 की power 1. and HCF comes out to be 60. so this is LCM 360, HCF is 6. So with this, the introduction of exercise 1.1 is completed. In our next video, we will start with the exercise solution of exercise 1.1. Thank you for watching.